डेफिनेशन डन। तो भाई क्या हो गया, definition of geography done. Is my class clear about that? Second thing is whether geography is science or not. Whether geography is science or not. I just told you geography is social science. Many people are told that geography is science. If you have science background, then geography आपको आएगी. No, 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 no. Student with any background can have geography. Is everyone okay? साइंस वाला कौन है? वो जियोलॉजी है. जियोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है? इज एवरीवन ओके? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं, सभी लोग मेरे साथ हैं, प्लीज घबराइएगा नहीं. Everyone, are you with me? I'm going to do something special now. Please pay attention to this. And do not be afraid. What I'm going to do, do not lose your confidence. What I have made right now, these are tools of geography. For geography, everyone, we must know how to make maps. How to make maps. We must know how to make diagrams. If you know this, you will learn how to get good marks in answers. You will get very high score in mains also. Get that? Is everyone there? Sir, I don't know how to draw map. Your teacher knows it. Don't worry, I will teach. We don't have to draw full maps. These are called part maps. If I am talking about Jammu and Kashmir, if I am talking about any disaster in Uttarakhand, yes or no? If I am talking about anything in Gujarat, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, इसमें भी हम आधा बना सकते. Yes or no? Is everyone with me on this? Sir, I am poor at drawing. How many of you are poor at drawing? Poor at drawing. Sir, मेरी drawing बहुत poor है, बहुत ज़्यादा poor है. देखो भाई, if your drawing is poor because of nutritional needs, please eat more. If there is a fluid shortage in body, please drink more, and drink water, not alcohol. Get that? Only if you have a genetic problem with drawing, then you will not be able to draw. But if it is a psychological problem, mental problem, emotional problem, trust me, I have taught so many students how to draw map that बात बात पे वो map यूज करते हैं. डोंट वरी ऑन दैट. मुझे पता है सब लोग ऐसे बड़ा बड़ा हाथ करेंगे, कुछ लोग 2 हाथ खड़ा करेंगे, कुछ पैर भी खड़ा करना चाहेंगे. आई कैन ट्रेन एवरीवन, सो डोंट वरी, यू विल आल्सो लर्न इट.
But as I said, I should be able to see the tools of geography. Is my class clear with the tools of geography? Yes. If you feel that you are very good at drawing, then you are not needed for this. Very good drawing नहीं चाहिए मुझे. ये कितनी देर में बनना चाहिए? 30 सेकेंड. यहाँ पिकासो नहीं बनाना है मुझे किसी को. मुझे एग्जाम में मार्क्स चाहिए. What do I need? I want marks in the examination. These tools are there. Now tell me, many of you who do not know how to draw map and diagram, if I start teaching you answer writing today, will it be fair or unfair? अभी पता ही नहीं है आपको. बहुत सारी चीजें आपके पास है ही नहीं. True or not? So that's going to be there. Is everyone okay with this? ये tools भी आपने सीखने in the coming classes. So पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, on the first day what is geography. I wanted to do that. I wanted to do the concept, whether it is science or not, and what are the tools. Yes or no? True. अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, सर मेरे को रटना है, आई जस्ट वॉन्ट टू मगअप, फील नहीं आ रहा मुझे. एवरीवन, आई एम हेयर टू गिव यू ज्योग्राफी और द फील. Geography or the field. And I'm again saying, there are students sitting in this class who are center mug. They are here for geography. They know our teacher knows to take us from step by step. Everything. I've given you content. I've also given you what? The map also. फील देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग फील का इंतजार कर रहे हैं, फील तो 14 तारीख को मिली होगी आपको. मिली या नहीं मिली? या वहां भी बोर हो गए थे? दिस इज IAS. कैसे नो? दिस इज IAS. यू वॉन्ट टू बी हेयर. ये आपका लक्ष्य है. यस और नो? बताना चाहता हूं, इवन द टॉलेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, even the tallest of the buildings have the deepest of the foundation. Everyone tell me, if I am asking you to work on your language and your map skills, am I boring you? क्या मैं आपको बोर कर रहा हूं? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि NCERT पढ़ते हैं, अगर मैं आपकी कंटेंट फाउंडेशन की बात पहले दिन कर रहा हूं, am I boring you? And then I say advance content and writing. Am I boring you? And if you feel that this is boring, if you feel that working on this is boring, तो यार बेशरम रंग देखो, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है. अब तो रंग भी बदल दिया मूवी में. True or not? To watch that, who's stopping you? I am saying if you are the mug, ये वाली चीज भाई बहुत क्लियर बता रहा हूं, दीज थिंग्स ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये मैजिक हो जाएगा. यू विल बी सरप्राइज्ड दैट पीपल विल रीड योर आंसर एंड दे से वाओ यार, दिस गाय और दिस गर्ल हैज द एबिलिटी टू राइट हाई थिंग्स एंड दिस थिंग. आज ये करवा रहा हूं यार, लैंग्वेज पे काम चल रही. ट्रू और नॉट? तो बहुत सारी भीड़ है, अचानक किसी ने ऐसे लॉग इन कर लिया, अरे भाई मजा नहीं आ रहा है. मजा, पठान, मजा और एजुकेशन, टू डिफरेंट थिंग्स. Do not confuse them. पठान होना चाहिए, शाम को उसका भी टाइम निकाल लेना, नो प्रॉब्लम. True? So let's come back to where we are. Everyone okay with the tools? करना है ये, हमें रेडी करना है. We will be working on the tools also. Spheres of geography. Everyone please write down the 5 spheres of geography. जल्दी से लिखेंगे. Everyone please write down the 5 spheres of geography. 5 spheres of geography. हिंदी मीडियम, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. क्विकली 5 spheres of geography. देखें how many of you remember that. Don't chat. I don't need any chat here. True? Everyone with me on this? अच्छा
You know what? I have 4 fingers and 1 thumb. Do they have the same role or different? They have different role, no? So I have something which I want to start right in the beginning. एक diagram बना रहा हूँ. Please pay attention to this diagram. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. Before making, wait. Let me make it. 1 circle, 2 circle, 3 circle, 4 circle. Lithosphere, hydrosphere, biosphere, atmosphere, and I am making them into these pillars, 4 pillars of life on earth. For a minute everyone tell me, is land important? Bhumi mein mrida, soil in the land, is it important for us or not? Yes. Do we need land to live? Yes. Do we need sand? Land is important. Without water can we survive? Can anything survive on the planet? Without other plants and animals can we survive? No. Atmosphere, gases band karenge, will we die or not? Is everyone okay? Where is the 5th sphere? Everyone, these are the 4 pillars. और इस sphere पर everyone please pay attention, ध्यान दीजिएगा. इस sphere पर है ये sphere, anthroposphere, ये हमारा sphere. It is resting on these 4 pillars. It is resting on these 4 pillars. सभी को ध्यान आ रहा है? कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, very very important concept. I will be taking your environment ecology also. Yes or no? Everyone made this? So there is 4 pillars are there, and on that 4 pillars human sphere is standing. Everyone okay? Which one is important now? Human sphere or the pillars? Which one is important? Which one is foundational? Human sphere or the pillars? Which one is important? So the pillars are important. Thank you. Yes, pillars are important. I want everyone to take note of this. Please get this correct. You know what man is doing? Man is eating into the lithosphere. Sand mining हो रही है, illegal sand mining. What is happening to the lithosphere? Shrinking. What is happening to the atmosphere? Shrinking. Greenhouse gases are increasing. Climate change is happening. Acid rain is happening. We are shrinking that. Biosphere. We are having one of the highest biodiversity losses. In the world. You know water is polluted. India में water stress बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में. Yes or no? What is happening? Pillars are shrinking. What is happening to the pillars? Pillars are shrinking. And what is happening to this? Does everyone know now that it is not just as we are looking into book, it is not just lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. The problem is the interplay of them. What is shrinking? The lithosphere, hydrosphere, atmosphere, they are shrinking. Yes or no? They are shrinking and our sphere is increasing. The kind of population that humans have, the earth cannot support it. And these ideas will take us into environment, ecology and the various problems with. आज class है introduction का. Today's class is about introduction, basics, foundation. Do you get the basics of environment also? This is leading to something called as ecological crisis, ecological imbalance.
It is because of that ecological imbalance that we have global warming. It is because of global warming we have climate change. It is because of climate change we have United Nations Framework Convention on Climate Change. It is because of UNFCCC we have the Paris Accord, Paris Agreement. It is because of Paris Agreement we are talking about intended nationally determined contributions. It is because of this Modi ji is talking about climate neutral or net negative. Do you get that? तो बहुत से बच्चों को लगता है, many students think कि सर ये पढ़ाइए, INDC क्लाइमेट चेंज पढ़ाइए, कनेक्शन यहां से आता है, ये भी पढ़ाएंगे. This is what is current affairs. We'll be talking about that. Is everyone looking at that? तो अगर ये कनेक्शन आपको पता है, you beginners, you know it, you are smartest people around, you are just about clearing this exam. बस ये ध्यान रखना है, कप में क्रैक नहीं, कप में क्रैक नहीं है, सारी चीजें बन जाएंगी. यहाँ पे नेट जीरो आ गया. नेट जीरो क्यों आया है, उसकी कहानी यहां से शुरू होती है. एंड दिस वे ऑफ शोइंग is going to help me in mains answer writing. Is everyone okay? अगर मुझे जल्दी होती तो मैं आज यही शुरू करता, आओ बच्चों नेट जीरो की बात करते हैं, ट्रू और नॉट. बट आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू रीच दैट. आई स्टार्टेड विद Turkey's earthquake. I said this is where we are going to go, but for that we must be clear with this. Is everyone okay with this? Get that? एक और रिक्वेस्ट है, एवरीवन. I have taken my education always offline. Now comes online. Online has an advantage. You can watch the lecture again. Please do not feel sad or bad that you had to watch it again. It does not make you any less. Tell me, late Lata Mangeshkar ji, she was a legend in singing. Lata Mangeshkar spent doing what most of her life? लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय किसमें व्यतीत किया? रियाज में, प्रैक्टिस, गेटिंग द सुर, द नोट करेक्ट. यस और नो? अगर आपको एक लेक्चर दोबारा देखना पड़े और अ पार्ट ऑफ लेक्चर यू हैव टू रिवाइज अगेन और अ बुक यू हैव टू रीड अगेन, is it going to be bad for our health or is it going to be good? Don't feel ashamed of that, feel proud of that. Ask your teachers with all right on the teacher, sir sada hak ethe rak, please help us with this. And we in our humility would always like to help all the students who are going in the direction towards the goal. जिनको बोर है तो उनको तो मैंने पहले बताया, पठान आजकल सुनते हैं, 1000 करोड़ होने वाला तो अच्छी होगी, ये सुनो. और बेशरम रंग तो इंटरेस्ट तो आएगा यार. तो लेट्स गो फर्दर. कहां पे चलें, वापस आ जाते हैं. टूल्स ऑफ ज्योग्राफी भी हो गया. क्लास खत्म करने का टाइम आ गया क्या? इफ यू आर टायर्ड, पहले दिन हो सकता है बच्चे थक गए हों, एक मौका दे दीजिए कुछ और दिखाने का. ये पढ़ना है पहला, कल हम ये पढ़ना शुरू करेंगे. एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिथोस्फीयर बिकॉज अर्थ इज द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर. मिनरल्स पे आना है. I have to come on minerals. What are minerals? What are rocks? But problem ये है problem ये है कि where did the minerals and rocks of the earth come from? ये कहां से आए हैं? Many of you do not know what is lithosphere. Beginners, absolutely okay if you do not know. You do not know what is mineral and rock. Even if I give you the definition of mineral and rock, it does not help me. Yes or no? उससे भी मेरी मदद नहीं होने वाली. Where did they come from? कहां से आए ये मिनरल्स एंड रॉक्स? एवरीवन, वेयर डिड दे कम फ्रॉम? एनी आइडिया? सॉइल से आए हैं. ओके, सो वेयर डिड सॉइल कम फ्रॉम? वेयर डिड सॉइल कम फ्रॉम? किसी ने कहा सॉइल, द इंटीरियर ऑफ अर्थ. वेरी गुड. वेयर डिड इंटीरियर ऑफ अर्थ, वहां कहां से पहुंचे? वहां कहां से पहुंचे? सर लिथियम जम्मू में है. अरे एकदम करंट अफेयर्स पे चल रहा है भाई. ये सुनो, बैटरी ही बना के मानेगा. देयर वाज समथिंग बिफोर देम.
4.6 billion years ago. There was something before this. Sun, 5 billion years. There was something before this. Milky Way galaxy. And there was something before this. Big Bang. A, B, C, D, E, F. पब्लिक वोट. कल की क्लास कहां से शुरू करें? Where should I start my class from? Smart students, where should I start my class from? यहां पर भी आएंगे. उसके बाद लिथोस्फीयर आएगा. लिथोस्फीयर के बाद जी आएगा. वोल्केनो और अर्थक्वेक आएगा. Where should I start from? Should I teach you everything or not? Should I bring it here, then go to lithosphere, then go to plate tectonic, then go to Wegener, then go to earthquake, volcano? ठीक जा रहा हूं? अगर ठीक जा रहा हूं तो बिल्कुल वो है. It has to be a consent. No, see, smart people sitting in front of me. हाँ सर, ये तो बात सही कह रहे हो आप. I have to understand what is metamorphic rock, what is igneous rock, what is granite. सर पता तो चले आया कहां से. पीछे से चलेंगे. yes or no? इसको थोड़ा सा पढ़ लें. लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, लिटिल नॉलेज चलेगा. एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, पीएचडी नहीं करेंगे. इज इट ओके? विल नॉट डू दैट. हाँ, इसमें हम पीएचडी कर लेते हैं. दिस इज आवर, वी विल बी एक्सपर्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर. इज इट ओके इफ आई टेक यू इनटू द स्पेस टुमारो? चलेगा? तो बिफोर एवरी क्लास you will know what is going to happen in the class. The planner will tell you. I said that's my promise. Informed students take a lot out of the teacher. Uninformed students are just sitting randomly. They do not know where is the goal of the class. I am saying the goal of the class is we'll start from this. कल हम सन के बारे में, अर्थ के बारे में सब कुछ समझ लें. ठीक है? उसके बाद अर्थ का इंटीरियर लिथोस्फीयर, we will be doing that. I will go step by step. My book would be, कौन सी बुक मैं यूज करने वाला हूं everyone? Which book am I going to use? This book. Book is also clear? Yes. Will you try reading this book somewhere today, tomorrow? अभी संडे को पढ़ ले ये वाली बुक. सैटरडे संडे को कर ले. Everyone, my classes will be Monday to Friday. Can we do it on Saturday, Sunday? चलेगा? मैंने अपनी बुक भी बता दी आपको, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ये भी बता दिया आपको. एक लास्ट चीज मुझे करनी है आपके साथ, इन पे भी बात करेंगे. मिनरल्स, व्हाट आर दिस? विल लुक एट दैट. अर्थ लुक्स लाइक दिस. इसमें इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, बट रॉक्स को पढ़ने से पहले वी नीड टू नो समथिंग बिफोर दैट. बेसिक डेफिनेशंस. ओके, आज करें इसे एवरीवन. एक और फ्रेश शीट पे एक डायग्राम बना रहा हूं. प्लीज कीप ड्रॉइंग दिस. आज कुछ परिभाषाएं भी दे रहा हूं. आई विल बी गिविंग यू सम डेफिनेशंस आल्सो. Geography is study of surface of earth and geography studies lithosphere. In lithosphere, I want to give you some basic definitions. A and B are lowlands. What is a lowland? निचले स्थल क्या होते हैं?
lowlands are lithospheric surface at or near MSL. Get that? और ये क्या होगी? What will this be? Highlands. Is everyone okay with the word lowland and highland? Everyone okay with the words lowland and highland? Use होंगे कल ये. In tomorrow's classes, I will be using all these things. Lowlands and highlands. Lowlands are lithospheric surfaces at or near MSL. And highlands are there. तो जल्दी से बताइए A and B में what will I include? What should I include? Does any word come to your mind for A and B? सर MSL क्या होता है? What is MSL? Mean sea level. मीन का मतलब हिंदी में औसत, एवरेज सी लेवल. डू यू नो सी राइजेज एंड फॉल्स. समुद्र की सतह जो है उठती भी है और नीचे भी आती है. क्यों आती है? ज्वार भाटा. हैव यू हर्ड ऑफ टाइड्स? टाइड्स राइज एंड फॉल. तो सी लेवल कीप्स ऑन चेंजिंग. उसका एवरेज अगर ले लिया जाए तो उसको मीन सी लेवल कहा जाता है. द एवरेज ऑफ high tide and low tide is called mean sea level. Everyone okay? Mean sea level. Very good. Many of you have answered it absolutely correct. These are plains. Very good. ये क्या हो गए? मैदानी भाग. ये मैदान हो गए. These are plains. Very good. And what are these? These are depressions. खड्ड हो गए, खाई हो गई, गर्त हो गया, तो डिप्रेशंस. लो लाइंग एरियाज आर कॉल्ड डिप्रेशंस एंड द सरफेस फ्लैट एरियाज, नियरली फ्लैट एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स. यस और नो? डी क्या है और डी क्या है? कैन आई से डी इज अ माउंटेन पीक? हाँ सर, ये तो क्लियर है. व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लेटू. व्हाट इज अ प्लेटू? अ फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड. समतल उच्च भूमि पठार कहलाती है. तो प्लेटू इज व्हाट? पठार. समतल उच्च भूमि पठार कहलाती है. तो यहां पर हमारे पास पठार भी है और मैदान भी है. ठीक है, पठार ऊपर, मैदान. ये समतल होते हैं, सपाट होते हैं. लेकिन जो निम्न स्तर होता है, थिंग्स विच लाई लो लैंड्स, दोज आर प्लेन्स. एट हाईलैंड्स दे आर कॉल्ड प्लेटूज. Everyone understood? True? What do you find? Okay, everyone. This screen is screen A. Everyone, this screen is screen A. And this screen is screen B. Tell me the one which was drawn in drawing. Drawing was better or the one which is in definitions? Which one is easier? This is screen B. कौन से में ज्यादा समझ में आता है? इसमें भी वही लिखा है. हाईलैंड्स आर प्लेटू, हिल्स, माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे होते, फोल्ड माउंटेन ऐसे होते, रेंज, वैली, गॉर्ज. दिस इज व्हाट कम्स इन द बुक्स. बुक्स में होता है. एम आई सपोज टू टीच दैट? वो भी बताऊंगा. आई विल टीच यू दिस ऑल्सो. बट इफ वी आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट, ये रुकती नहीं है. दे आर नॉट इंटरेस्टिंग. आवर माइंड लाइक्स थिंग्स विच इट कैन रिलेट टू.
यहीं पर लिखा है फोल्ड माउंटेन, पता नहीं, बट माउंटेन बना हो तो चीजें क्लियर होती हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट माय क्लासेस विल बी अबाउट जॉटिंग्स, my classes will have these notes also. I will be giving you technical part also, I will be giving you general part also, applied part also. Only request is apne notes mein you have this slide, yes or no? If you pause this video in the evening, can you update your notes with the slide? कर सकते हैं. किसके notes हैं? आप ही के notes हैं. मेरा काम है notes को I will keep them as crisp and as short as possible. Everyone okay? So class is about discussion, class is about concept clarity, class is about jottings. Do a lot of jottings. Get that? But after class is about your reading, is about your completing your note. Do that. Keep the mug intact. Result बिल्कुल आएगा. एक क्वेश्चन है सभी के लिए, एक आंसर भी लिखते हैं आज. क्लाइमेट पे देखते हैं. How does rain happen? And how many types of rain do you know? How many types of rain are possible? 1, 2, 3, many. There's only 1, 2 types, 3 types, many types, 5 types, 10 types. Last is question invalid. Okay. और एक और क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल करप्शन. ways, 1 way, 2 ways, 3 ways, many ways. Question invalid. Question invalid. Everyone, please pay attention. मैंने इसे अभी हाल ही में बहुत सैडली ऐसा हुआ कि गुजरात में भी हमने देखा कि पेपर कुछ लीक हो गए. यस नो, बच्चों ने एग्जाम की तैयारी दी, तो कहीं तो करप्शन है. somewhere there is corruption. Yes or no? We have to get rid of corruption. तो if ऐसे मैं स्क्रीन पे नाम देख रहा हूं, if आकाश writes, आकाश में write 2 reasons, राहुल में write 3 reasons, गार्गी में write many reasons. Yes, Anurag can write 33 reasons. यार ये question invalid है. This question is invalid because there are many ways. There are many ways. Yes or no? In humanities, there are many ways of doing things. But geography, remember, is a semi-science. And I want to tell you, semi-science has a property, and the property, good property, is objective. Objective means there are fixed answers. Humanities, social sciences, subjective. Not. On the development of India, BJP has one view, Congress has another view, Aam Aadmi Party has another view. Yes or no? They all have different views. No. But on the height of Mount Everest, that doesn't change. Anyone coming from BJP, Aam Aadmi Party or Janata Dal, whatever, the answer will be the same. So geography as a subject has this advantage of being objective. The answer है 3. There are only 3 types of precipitations. I will teach you with diagrams and drawings. अभी क्योंकि क्लास को मैं बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, I want all my students who have come for the first day to the class, I wanted to show you that what is it. Number one is this convectional rainfall. I will teach you how it happens. Convectional rainfall. Number 2 is orographic rainfall. And number 3 is frontal rainfall. Get that?
We will learn this. Now this is given in the books. This is given in the books. I want you to learn to draw them, learn to understand them. सबसे बड़ी बात, this is not geography, this is science. But this happens at equator. This is geography. कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर संवहनीय वर्षा होगी. Convectional rain will happen at equator. My job to teach why and how. Orographic rain will happen on western घाट. हमारे पश्चिमी घाट में ये वर्षा होती है, ओरोग्राफिक होती, ठीक है. और यहाँ पर क्या है, ये फ्रंट की बात हो रही है. फ्रंटल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ दिस थिंग, दिस इज हैपनिंग. So we will be looking at many things. जब हम atmosphere पे आएंगे तब वो आएंगे. But tell me one thing, before I go into types of precipitation, should I tell my students what is humidity, what is evaporation, what is condensation? बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? उसके बाद इस पर आऊंगा. True? Is everyone okay? So today was the class day when we are talking about today's class. मैं फिर से एक बार आपको प्लानर दिखा देना चाहता हूँ. Outline and basics of geography. Is everyone clear with that? Did you understand something about geography? Something about your course? What is your course going to be? What are your references? What is your syllabus? And what your teacher is going to take you through? Everyone clear with that? I also don't want to stretch this class any further. I just wanted to give a glimpse of the course, of the syllabus. Yes, and I want this from you. ये हो जाएगा कल से? The class is scheduled for 2 hours. We'll keep it less than that. Generally 1 hour 30 minutes में खत्म हो जाएगा. If the topic is in between, I will complete that. Everyone okay? Well, इसका वादा याद रखिएगा. I will be here at 8:30. Tomorrow, what are we starting with? Pace. कहाँ से पता चलेगा? ये आपके कोर्स अपडेट में आ जाएगा. प्लानर, दिस प्लानर विल कम इन द कोर्स अपडेट. इज एवरीवन ओके? एंड व्हाट इज द होमवर्क? फॉर टुडे? नंबर 1, शिफ्ट ऑफ कैपिटल्स लेकर आएंगे. एंड नंबर 2, व्हाट इज नंबर 2? क्लास 11th पार्ट 1 NCERT फिजिकल ज्योग्राफी आपके पास होनी चाहिए. रीड स्पेस फ्रॉम इट. एवरीवन ओके? मेनी पीपल आर आस्किंग अबाउट साइक्लोनिक रेनफॉल. अभी नहीं कर रहे हैं बात. वील टॉक अबाउट दैट. साइक्लोनिक रेनफॉल कुछ नहीं होता, वो NCERT ने एक कैटेगरी डाली है. दे मीन फ्रंटल रेनफॉल ओनली. ठीक है, NCERT हैज पुट दैट कैटेगरी. एवरीवन ओके? जस्ट अ recap of the class. What did we do today? We looked at how we are going to go about with geography classes. What is the plan of the schemes? How to make notes, how to read, which all books to be read, the assignments and homeworks which I will be giving, the jottings which I talked about. We also tried to show you that with current affairs, हम उस current affairs तक पहुंचने के लिए we'll start with some foundations and an invitation for all of us to have that integrity. Let's get into this. मजा आएगा. And I will see you tomorrow. If you have any questions, आप हमारे ऐप पे ज़रूर लिख दीजिएगा. And with that, out. जय हिंद.